Hello everyone, Salam, Namaste, Adab, and welcome to today's event. Today we have a very interesting topic, ghostly presence of Urdu in Indian cultural sphere. And the speaker is Dr. Rashid Ali, who is a senior assistant professor at the Department of Mass Communication and News Media, Central University of Jammu, India. And then two other speakers, one to do the formal introductory remarks is Dr. Tanveer Ejaz, my good friend. He is associate professor in the Department of Political Science, Ramjas College, Delhi University. And the concluding remarks will be given by a very famous personality, Dr. M. Said Alam, um, a very well-known playwright and director. And these guys are going to tell you about Urdu, Urdu everywhere, Urdu nowhere, I guess. The definition of ghostly presence is that it is there everywhere all the time, and officially perhaps nowhere. So it's a very good topic, some politically painful too. Culturally, we don't care because we know Urdu is there. So let's start with Dr. Tanveer Ejaz for the formal kind of introductory remarks. Tanvir. Thank you, Razi Sahab, and thank you, Rashid Bhai, also for uh, asking me to give the introductory remarks. Uh, the fact is that, see, I do not belong to a discipline of literature, but of course, I know that every literature has lots of politics in it, and so therefore, the politics of the literature, I think I would be able to talk something about it. Thank you, everyone, for inviting me, and Raji Saab, of course, a good friend. Yeah, so the topic is ghostly presence of Urdu in the Indian cultural space, right? So there are perhaps I think there are three things out here which needs to be underlined. One, which is of course, is the Indian cultural space. So, what do we mean by Indian cultural space? How do we look at Indian cultural space? It's, I think, quite contradictory in a sense that when we talk about Indian cultural space, we normally consider uh, consider it as in a sense that we majorly consider it as part of the religious cultural space. So that is one of the paradox of the way how we have understood cultural space. Uh, Religion being the very dominant part in India, of course, it's very what we can call it as an egregiously religious space. So the cultural space gets subsumed by a religious space. Now, when the religious space dominates, of course, the things turn into a very different direction. Urdu, right? A language, of course, I think the speaker would talk in great detail about its origin and how it flourished, and then, of course, its decline. Or perhaps one can say, may not be a decline, there might be a revival also. Perhaps the way how Rekhta has come up and the kind of attention it generates, attraction it generates, I think there might be a kind of revival also. I mean, the languages have revived. Hebrew, for example, has revived. So I think there is a hope for Urdu also. So, but nevertheless, Urdu in India, finds itself in a very, very I must say, in a very special way, in the whole Indian literature or linguistic landscape. I mean, we all know that India is when we talk about linguistic landscape, India is 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 having an unmatched scale and I mean the diversity is unmatched in scale and richness.
right? Perhaps we see almost around 1,300 mother tongues and constitutionally 121 constitutionally recognized languages. So one can imagine the kind of diversity, and of course, this diversity is the strength for India. So Urdu being one of the languages, perhaps which of course people call it as Nastalic origin, but the fact that in India at a one point of time, it was largely spoken in North India, and it got weaved into the cultural landscape. Uh, and everybody, it became the language, of course, got weaved into the freedom struggle as well. So why, I don't know. I mean, one will have to listen to Rashid Bhai, that how it has, once a very lively, once a very kicking. I mean, we could not have done without Urdu. Still, we can't do without Urdu. How it has become a ghost, right? So languages, of course, uh, we also understand as linguistics. I mean, some of the great major linguistics, they have talked about that the languages, they disappear, right? I mean, there are a lot of examples of it, right? Why do they disappear? You know, why do they become ghosts? What Rashid would be talking about. Why do they start disappearing? I mean, as far as Urdu is concerned, since I do not have much time, as far as Urdu is concerned in India, which of course was where we saw Urdu, in our everyday life, in the lived reality. Why it has been on the waning side, and my contention is that, I mean, it is not in the waning side, of course, because there are symbols where we see that it could not wane. I mean, the death of Urdu perhaps means death of India itself, right? So, anyways, what were the factors? I'll just mention 4 5 factors, perhaps, which Rashid Bhai might pick it up in terms of explaining how it has become a ghost now in the Indian cultural landscape. One is that, post partition, of course, partition had a very very debilitating effect on the idea of India, and of course the manner in which languages turned out to be communalized. So one is the whole question of identity of the language gets identified with a certain regional category, but unfortunately, during the freedom struggle and post partition, it got identified with Pakistan, and therefore it lost its patronage among non-Muslims. Uh, of course, I mean, there are lots of stories about it, but I would not get into all those. That how Urdu itself, I mean, the language itself could not secularize itself, right? I mean, the very word secular, perhaps in Urdu during freedom struggle in the in media, it was written as La Mazhab, which had a very bad impact on people's imagination of their identity, of their religion, etc. So therefore Urdu also could not live up to the whole idea of new conceptions and idea of different kinds of imaginations, right? So one is, of course, the political partition and its association with Pakistan, and therefore its whole identity. The second factor is the institutional neglect post partition. Of course, it became, something as a language which needs to be taught at madarsa, and and therefore most of the places in the schools also, perhaps it was replaced by Hindi or English, and therefore there was a very dwindling government support for Urdu medium instructions. So therefore the institutional neglect, perhaps, which came from the, I mean, how government considered, I mean, it became a Hindi versus Urdu, rather than Hindi and Urdu taking together. It became something like a Hindi versus Urdu, and therefore there were a lot of neglect which was coming up from the government side, from the state side. So it was a state neglect
right? I would call it as a state neglect. People did not neglect it. I mean, we could see in Punjab and a lot of other places where a lot of non-Muslims, of course, were reading Urdu newspapers. There was a tradition, of course, in particularly north and even in south also. There were particular traditions where in houses they were reading. The Urdu newspapers and Urdu as a kind of a lingua franca. So this is the third very interesting aspect, of course, which is the colonial concept, which is the English shift, of course, right? I mean, what English has always been as a tool of imperialism. I always call English as something which tries to hegemonize, despite the fact that it is, of course, the language of modernity, the language of globalization, the language of cosmopolitanism. But the fact is that within its process and within its progress, it tries to hegemonize, and it tries to also sort of tries to homogenize also. So therefore, it would attack the whole diversity of the linguistic landscape. So English shift led to some sort of a waning of Urdu literature. uh, and of course, the script marginalization. Once there is this script marginalization, you only get to hear. You don't get to read. You don't get to write. I mean, of course, if, reading and writing goes together. So therefore, this whole idea of a script marginalization led to uh, led to a language, which was getting invisibilized, right? And not just simply invisibilized, but what Rashid Bhai would call it as getting into as a ghost, right? And with this, of course, I bring in some very interesting element, is that even, I mean, the whole, which Rashid Bhai would talk about, that the whole Bollywood, right, which is referred to as Hindi cinema, but using lot of Urdu, words, songs, I mean, the whole romanticism in Bollywood is done by. I mean, I can't imagine, a song purely in Hindi, right? Perhaps there would be no song in Bollywood which would be purely in Hindi. What nowadays it has been called as Hindi, right? So so that is one of the reasons why the invisibilization has taken place, because there is a concerted effort, particularly since last decade. Uh, there has been a concerted effort, right, to invisibilize Urdu, and not only just concerted effort, but I sometimes call it as a pathological homogenization which is taking place, in terms of single identity, single culture, one nation, etc. Now this pathological homogenization, which perhaps we see in terms of a certain kind of political agenda, uh, is leading to erosion of Urdu, and this erosion of Urdu, right, is also having an impact over the erosion of, let's say, the assimilation of identity, culture, and the political traditions. So therefore, I think one will have to take with a pinch of salt that that the process is moving in double direction, right? One is that there are forces who are trying to exclude their, I mean, and that fear of exclusion is there with the Urdu speaking people, right? All those, not only Muslims, right? I would involve here non-Muslims also who speak Urdu. They tend to avoid the usage of Urdu word, because now using Urdu has become a symbol of discrimination also. So therefore, I think this is the process, of course, which is laced in a certain kind of political ideology. But the point is that, if this system or this political agenda which goes by
conservatism or neoconservatism, picks up the majoritarianism aspect of language, right? So, which of course is not true also, in a sense that there is a north-south divide. Hindi perhaps is largely spoken in the North India. In South India, we do not see people speaking Hindi. But I mean, Urdu perhaps can be seen as some sort of a hyphen between North and South. So therefore, I think my whole conception about Urdu is that it's a the process is not in unidirectional, but there's a two process going against each other. One is that there is an effort to invisibilize, right? So the more, I mean, of course, more we invisibilize, more it comes up, right? More it pops up. The fact, it's very interesting to see that one of the movies recently, which has grossed so much of money, super hit movie, has brought in a kawali, from the yesteryears, from Barsat Ki Raat, I'm talking about the movie Duranda, where you have this kawali, and it has become a big hit. And if you just listen to that kawali, it is full with Urdu words, but it has got onto people's mind, and people are humming it. So I think it's not that easy. My whole contention is that it's not that easy to invisibilize Urdu. There are efforts to invisibilize, but it's not that easy because I think it's a matter of aesthetics also. Urdu is a matter of aesthetics. Rekhta has made it very clear that it's a matter of aesthetics. Aesthetics have both power and identity. So I should stop here because I think we need to listen to Rashid Bhai. Thank you so much. Thank you so much. So I should start, sir. Yes, of Am I course. audible? Yes, yes, of course. Yes. Okay. So I am Rashid. I teach at Central University of Jammu, Media Studies. Much of the lecture has already been given by Dr. Tanveer Ejaz, and he has made me speechless. And he has mostly said much of the things which I'm going to say. But I think that I should not repeat. One thing that he says is not largely correct. That Urdu actually emerged in North India. This is not the start of my lecture. I just, found out. So I'll correct, I'll start from there. So Urdu, as we see Hindvi in 13th and 12th century, though it emerged in North India and particularly Delhi Sultanate. But later on, Urdu as a language, it emerged in Deccan, South India, right? And we have the earliest manuscript written in Nastaliq by, if I correctly remember, it was uh, Nizami who wrote Padam Rao, Kadam Rao, or something like that, some narrative poem, very long. In 15th century, it was written. So, as you correctly said that, it should be a hyphen, Urdu can be a hyphen between North and South. But I think that it was already there. This hyphen or Urdu as a kind of hyphenated category already existed. This is the first point, a response to your lecture argument. And then I have received one text here, which is in fact crucial to understanding. This text is written in Hindi. uh, ये साहब लिखते हैं कि जब ये बातचीत उर्दू अदब पर आधारित है तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये गुफ्तगू उर्दू में ही हो. Irony is that I am Dr. Tanveer Ejaz is spoke in English. I am speaking in English. And the person who wants us to speak on Urdu, he's writing in Devanagari Lipi. This is the biggest irony of this entire thing. And from here, I'll start that, how the erasure of Urdu has happened in the cultural milieu.
Prior to that, I'll just come to the last lecture organized by Washington, D.C. If you remember, it was Ghazala Bahab. If you remember correctly, so she was invited to speak on Hindi Belt because she has written a book on Hindi Belt. And recently, I also read some excerpts from this book, Muslim Identity in Hindi Cinema. So, these two frames, Hindi Belt and this Hindi cinema, uh, like, it's a kind of optic through which Hindi language has been essentialized, right? So this essentialization produces a grave misunderstanding because calling a Hindi belt is a kind of official designation it's a kind of a status designation. Ordinarily, it would not be called as a Hindi belt because there are so many vernaculars are speaking within this Hindi belt, right? And when you say the Hindi belt, you actually undermine other vernaculars. And when you say Hindi, do you not also undermine Urdu? Right, because Urdu and Hindi, though they are sister languages, uh, this entire idea of mutual intelligibility is is a very problematic category that forces one language to thrive at the cost of uh, the decline of other languages. So this is the first part of it. So when I chose the ghostly presence of Urdu, why ghostly? So it's a kind of eerie. Urdu exists as a kind of eerie ghost-like form. Urdu is everywhere and nowhere at the same time. हम लोग इसे फिल्मी गानों में सुनते हैं. Of course, if we remember the dialogues of Mughal Azam, who would not say that masterpiece dialogues were written, poetry, mushaira, and religious sermons में उर्दू exist करती है आज भी. But in gazetteers, in schools, in government offices, in normal day-to-day life, the exchanges, the linguistic exchanges, their Urdu seems to be has a limiting effect. So therefore, this why I call it a ghostly presence of Urdu, because it is there, it is not there. And culturally, like Razi Sahab rightly pointed out, it is culturally there. So Urdu is indispensable to culture, but at the same time, it is politically marginalized, institutionally as well. It is like completely erased. So how has this happened? This is an important optic frame. So I am going to use the Marxian concept called commodity fetishism. First of all, this will be my frame of reference to present this lecture on the ghostly presence of Urdu. So Karl Marx also talks about ghost, commodity as ghost. So Marx has argued that under capitalism, objects or commodity appear to have value on their own, while the social relations and social histories and labor which have produced them, they are completely hidden. To all of us, whatever we buy, any commodity looks very, very elegant, very beautiful, and therefore we buy it. And we also consider that, this is quite natural, right? But at the same time, when we look at a commodity, we don't look at its history. So the same thing has happened to Urdu. Urdu circulates as very beautiful, romantic, and emotional language. But in everywhere in governance, primarily, it is erased. It is obliterated. So in a way, it is a kind of fetishized cultural object. Culturally, it is empowered,
but politically it is disempowered. So this is how I have tried to understand Marxian concept of commodity fetishism. But this commodity fetishism, uh, like, in terms of Urdu, the one more problem that, Marx talks about commodity fetishism, and he makes an interesting point that any commodity, it does not have inherently any power. We human beings and the agency, capitalist agency, they given the power to a particular commodity, and after that, the commodity starts controlling us. And as it happens in case of religions also, deities, they don't have any power, but human beings have given power to them, and they start controlling us. Similarly, capital also circulates to us in the same manner. A currency note does not have a power inherently, but in a kind of a structure, it starts controlling us. But when we talk about Urdu, that's the only thing, like, I'm little uh, not too much into this commodity fetishism, because Urdu, as a kind of commodity, it had the power, it had the courtly power, it had the administrative power once upon a time during the colonial administration and during the Mughal era. But that power has completely diminished now, and Urdu does not control anybody. In fact, the governments and the state agencies, they have started controlling Urdu. This is the reference I just wanted to make from this Marxist point of view, from this commodity fetishism. And how this has happened, so we have to get into the past. Like, when the two cosmopolises, they were merging, of course, when we talk of cosmopolis, of course, we can't ignore Sanskrit cosmopolis, which is a concept given by Sheldon Pollock. And then Richard Eaton also gave a concept of Persian cosmopolis. So Urdu, when it emerged, it was a kind of merging of two cosmopolises, where Persian cosmopolis basically edged over the Sanskrit cosmopolis. By the time Persian cosmopolis started to exist, Sanskrit cosmopolis was actually retreating. It was diminishing. So, but at that time, the merging had happened, and it produced a person called Amir Khosrow, who was proficient. He was a polyglot. He was proficient in all kinds of languages: Persian, Arabic, Hindi, even Sanskrit also. And he spoke to the people through Hindi, through poetry. Right. So the journey of Urdu starts from here. So when this merging happened, Urdu was considered like other languages, right? An integral part of the life. India at that time did not exist. So I would not use the term nation state in medieval times. I will not retroject it. But Urdu had it a kind of shared language. It was spoken in urban areas, in courts. It was very flexible. It was spoken in military camps. Therefore, we have so many other synonyms for Urdu, like Rekhta, Urdu and Walla, etc., and etc. It was deeply syncretic, right? It was not tied to a particular religious identity. And a major example would be Mirza Dabir, who is considered to be one of the best Marsiya Nigars, along with uh, Mir Babur Ali Anis, right? His actual name was Gopal Das, and he converted to Shia Islam, right? And he wrote wonderful Marsiyas, right? And the other person was also there. His name was Munshi Chamanlal. I'm talking about this Awadh area, which is nearby Lucknow. Munshi Chamanlal, who was also a kind of Kayast.
and he wrote wonderful Marcia at that time, right? He did not convert, which means that the people. Why I'm talking about Marcia is also an interesting optic to look at, because Marcia is little sacred. It's not like Ghazal, Masnavi, or Musaddas for that matter. It is a very sacred, and it is tied to ritual aspect of Shia Muslims, right? So, and there you are writing Marcia, being a Kayast, being a Hindu, you are writing. So that means Urdu, per se, was a very syncretic language at that time. Uh, so what happened? Why this syncretism at that time, which Urdu carried along, why it diminished in the in later part of history? And it happened during the colonial period. And colonial period, which gave rise to the print capitalism. Print capitalism, as we all understand, is a concept given by Benedict Anderson when he talks about the nation state, how print capitalism paved the way for nation states to emerge in medieval times, in modern times in Europe, right? Uh, Renaissance and all, he talks about that. Here also, when the colonialism persisted, it required standardization. It required all sorts of standardization, which was also mentioned by Dr. Tanveer Ejaz briefly. So I'll just speak about it a little bit more. This standardization needed a kind of fixed script. It needed a grammar, and more importantly, it needed a clearly defined reading public. So, this print capitalism was entering into a public sphere because it wanted consumers, it wanted readers, again, a kind in the form of commodity. Right. So colonial administration at that time encouraged certain languages and certain scripts over others. So I'll just give you a kind of timeline here, how this happened. Like, from 1800 to 1830, we see Fort William colleges where so many Urdu prose and Urdu fiction that was encouraged at that time. It was in Nastali, right? Nastalik is for non-Urdu speakers. I should tell that Nastalik is a kind of a script, just like Devanagari, and Arabic, Persian, and Urdu, and many other languages are written in Nastalik. That is also called Perso-Arabic script. So at that time, Nastalik was favored when Adam Gilchrist was there in the Fort William College. After this when education reform started to happen during the time of Macaulay, uh, Devanagari starts gaining edge over Nastaliq. Then Hunter Commission came after 1880, and most of the print manuals, they started to be published in Devanagari. So in that sense, Devanagari was preferred. And 1900 onwards, we see the establishment of Nagar Pracharni Sabha and all, uh, through which, Devanagari acquired a kind of structural dominance over Nastaliq. So, Urdu, which is written in Nastaliq. So this scribal structuralism paved the way for Devanagari to flourish at the cost of Nastaliq. This is the part of the script. And now I'll talk about the language. I'll just also give you a timeline how this thing happened. Like 1840s to 50s onward, during 1840s and 50s, in 10 years or 15 years, most of the publications, around 70% publications, were in Urdu, right? After the mutiny, or many people call it the First War of Indian Independence, so Urdu newspapers, they grew exceedingly, they grew magnificently, and their numbers were more than 140, whereas Hindi newspapers, they were roughly around 50. So here Urdu had dominated journalism uh, till 1880.
literary magazines and political commentary, they were written in Urdu at that time. After 1880 and 1900, when Nagar Parcharni Sabha came up in a big way and which started discouraging Nastaliq and Urdu language, so we see a tremendous decline of Urdu. So the Hindi publications grew by 1300 and Urdu publications, they grew by 700. It's almost, 50% decline Urdu suffered at that time. So from this, we have four takeaways. In the initial period of 19th century, Urdu had dominated the public sphere. And at the end of the century, Hindi won the institutional battle. Right. So print capitalism and education policy, whether the education policy was of Macaulay or of other Hindi stalwarts, right? So it paved a very crucial turning point in history. And that history now came to be inherited by cinema itself. So I'll talk about three people here to make it more lucid. So there was this person called Shiv Prasad Sitare Hind who had written a polemical text called Timir Nashak. Timir Nashak का मतलब होता है the destroyer of darkness. So, in that text he wrote, and it was written in early 19th century. So he wrote that Urdu should be opposed vehemently. Second, Urdu is alien to Indianness. So he was very Puritan. And then came Bhartendu Harishchandra, as we know him, he is one of the greatest playwrights of Hindi, right? And Andher Nagri, Chaupat Rajas, much of the plays, many plays he wrote at that time. He also talked about Hindi. He also opposed Urdu. But since Urdu was spoken by a lot of people, a majority of North Indian population at that time, I would not call majority. Majority is a bad word here because, people also spoke other vernacular languages at their homes and all. So many people, Urdu was spoken by many people. So he could not have simply done away with Urdu. So he chose hybridity over purity. So he was not as pure as Shiv Prasad Sitare Hind. But if you just look at the polemical debate that happened between Bhartendu and Sir Syed Ahmad Khan, you'll understand what his politics was. And interestingly, when Premchand, who is considered the doyen of Hindi and Urdu literature, when Premchand came, initially he wrote in Urdu. Most of his writings from 1901 onwards, he started writing, and most of his writings were in Urdu. But after 1930 or after 1925, he started giving preference to Devanagari script, right? So his famous novel, which is considered one of the best novels, the name of that novel, it was written in 1931. It was Godan, right? So Godan was written in Devanagari script, which means it was written in Hindi language. So how scripts become political? This is one part of the story. Devanagari was promoted as kind of a rational and suitable language for mass education. Nastaliq, as when we see Nastaliq, it's a very ornamental because many calligraphies are done in Nastaliq and it is written from right to left. Hindi is written from left to right. So while English was also written from left to right, Hindi also chose a script from left to right. This one part of the story, and because Urdu had a very ornamental kind of lakeers and lines, etc. and etc., which gave beauty to it through that Nastaliq script. So for the colonial administration, it was very difficult to standardize at that time. So they made a kind of a technical judgment. Uh, they started pushing out Urdu slowly from the colonial administration,
right? And when they were trying to uh, 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 promote a script, they thought that, having nostalgic is quite impractical. So Urdu started becoming a language one could speak and enjoy, but you simply cannot invest in, right? So again, the idea of commodity culture and the idea of leadership that gained currency at that time. So through all these things, there was a distinct kind of Urdu Hindi schism, Urdu Hindi divide that uh, historically we have perceived it. Linguistically and syntactically, Urdu and Hindi are very, very close, not only mutually intelligible, like, Punjabi and Dogri and say Marathi and Konkani. Mutually, it's not about mutual intelligibility. It's also, they are extremely close. Their grammar is same, everything is same. Only the script has changed, right? Only one more thing is that, in everyday speech, you could extinguish because of the vocabulary that Urdu uses and the vocabulary that Hindi uses. So this everyday speech also became a battleground for the oppositionality. You have started opposing language, and Hindi came to be associated with Hindu identity, and further uh, on, it came to be associated with nationalist identity. Hindu identity, nationalism, they got mixed, and they got badly mixed, and Urdu came to be associated with Muslims. So one thing that people understand that Urdu and Hindi, the difference or the animosity between Urdu and Hindi is basically post-partition, which is incorrect to my understanding. It had already happened. It had already transpired in the 19th century and the early 19th century. Also, after partition, this divide basically hardened. Urdu became the language of the nation state. Hindi became the language of the nation state. Urdu at that time was not outlawed. I would not call it outlawed, but it was reduced to a minority language. I am using minority in both sense. Minority in terms of linguistic boundary, and also in terms of the boundary of community, where you can explicitly make out a minority out of language and out of a community. And when cinema came to India, and particularly say in silent era, and then also in the talkie cinema that came, Urdu by that time had lost much of its political legitimacy. It was only the cultural aspect of Urdu that had kept it alive at that time. So much of it had was lost. Interestingly, early Indian cinema, that is called silent era, uh, it was multilingual. Most of us think that, when cinema was silent, there was no language. But no, there was a language, because a language is not only the spoken words and written script. Language also comes with our non-verbal communication, like our gestures, haptics, and oculesics. They all go into making that particular language. And in that particular cultural milieu, these non-verbal communications, they sprout. So they are tied to the language. Like, when Raja Harishchandra was made in 1911, we think that it had no language, but it definitely had a language. Most of the non-verbal communications, they were coming from Marathi cultural milieu, right? And the intertitles, when they were used in the film,
they had Marathi. Initially, they had Marathi, and later on, Hindi and other languages, they started to be uh, gaining currency there, right? So it the language had it was a Marathi language. When sound arrived, when actual talkie cinema arrived in 1931, Urdu, because Urdu in the past it was connected to more of a kind of a sound rather than the script, because Nastaliq script all had already started to be declining by that time. So the sound of Urdu, the, that paved the way for. And also one part is that when sound cinema came, it was tied to Parsi theater, and Parsi theater was all about Urdu at that time. So much of it, Urdu prevailed uh, in the cinema. What do you call talkie cinema and sound cinema? But again, as that as uh, uh, as the time grew, Urdu cinema started to market itself or promote itself in Devanagari. Most of the posters, they were written in the Devanagari scripts, but the aura of the film used to be Urdu, completely Urdu, right? So Urdu had become a sound. Urdu was only heard, it was not seen. It happened, in the pre-partition era, and particularly in a major cultural sphere that is called cinema. So the the separation between sound and script turned Urdu into a voice without official visibility. This is also one of the aspects that I just wanted to talk about. And then uh, Urdu language as a kind of alien language, it has started to be perceived not after partition when Pakistan was formed. It has started to be perceived the way characters and the scripts and the narrative they were structured. I'll give you an example of a film called Sikandar, which was made by Sohrab Modi in 1941. This film is about Alexander, the Macedonian king who had this vision of triumphing the entire world, who wanted to become the Raja of the entire world. Here, language played an important role in making which language would belong to Alexander and which language would belong to Porus. Porus, who is the counterpart of Alexander in the film, and a kind of battle happens between them in the film, right? Though Porus, much of the history of Porus is uh, doubted, but here I'm only talking about the film Alexander and Porus. So now what happens that Indian characters like Porus and his sons and his army, they speak in a neutral Hindi language, which suggested that they are rooted to an authentic Indianness. On the other hand, Alexander and his army, they spoke heavily Persianized Urdu. If you just watch the film, you'll understand what I am saying. Those words and the kind of language that is not a day-to-day language that we speak today, right? So through this film, audience was trained to hear Urdu as a language of the invaders. Not only Alexander was an invader, Urdu also became an invader language. And this persisted for a long time. In fact, in the Sikandar-e-Azam, that was the second film which was made in 1965. And if you remember, it had a very beautiful patriotic song sung by Muhammad Rafi, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. So this film is basically a direct copy of this film Sikandar, which was made in 1941. In Sikandar-e-Azam, the setting is the same, everything is same. The only difference is that the film sharpens linguistic boundaries.
Earlier, the in Sikandar film, it was neutral Hindi that was spoken by the Indic characters like chorus. But in this film, chaste Sanskritized Hindi was spoken by the Indic characters. And interestingly, Prithvi Raj Kapoor, who played the role of Porus in Sikandar-e-Azam in later film, he played the role of Sikandar in his first film in 1941. Therefore, this becomes very crucial. Prithvi Raj Kapoor, who came from Parsi tradition or Parsi theatre, he was so well proficient in Urdu language. And in fact, Hindi was alien to him and he was made to speak Sanskritized Hindi in Sikandar-e-Azam. That's also an interesting area to understand. So this foreignness, like, as people claim that, Pakistan made Urdu the national language, but this foreignness is tied to Urdu even prior to, cinema and prior to partition era. This is my uh, argument here. And this is why I simply say that Urdu has got its ghostly presence all all over the cultural sphere in India. Many people try to remove it, they try to erase it, right? But they have not been successful so far. Uh, it is not considered a central language policy as the official narrative goes. It is not even considered a national language now. Uh, it is preference is given to other vernaculars at this moment. As if we look at the language policy of India, right? And so now, what is the status of Urdu? Urdu survives in songs. And now even today, these Bollywood films, they're also shifting towards English words. They're uh, basically trying to erase Urdu even from the songs. If many songs that you hear, many English words or other words, they are creeping in a big way. But yet, it is still there in the Bollywood cinema. Love is there, and of course, nostalgia is there. But it is not there in the administration, not there in the education, not there in the power. So, this is how I understand how Urdu has acquired whatever status it has. So, there were many myths about Urdu being once upon a time being the language of the people, and it had got courtly and royal patronage. That's true. It had, in a way, that status started declining, and it has continued to decline. And now uh, there is no taker of Urdu. Even this controversy that happened in West Bengal uh, a couple of months ago, where Javed Akhtar was not allowed to speak uh, uh, because many Muslim organizations or conservative organizations thought that he's an atheist, so he should not be allowed to speak, right? And he was going to speak on Urdu in Hindi cinema. So this is the irony. Urdu in Hindi cinema. I don't agree that, I don't support all those conservative Muslims, those who opposed. That's of course. I mean, like by no yardstick one would support any such thing by any conservative organization. But at the same time, Javed Akhtar, he wanted to the title of the talk was Urdu in Hindi cinema, which is quite ironical. And I'll rest my lecture here, with this irony that actually Urdu has become like a ghost. Thank you very much. Wonderful, wonderful, Rashid Saab. Very good lecture and a lot of
theories. Faisal, Faisal, we should conclude first and then do Yeah, that. Huh? sorry. No, that's okay. Now I'll invite Saeed Alam Saad for the concluding remarks. Um, अब आपके हाथ में है सर, आप उर्दू के बारे में या जो भी इसके बारे में कहा गया है। जी आप यू आर म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है, बिल्कुल। Am I audible? यस यस सर, यस यस। Let me conclude it. I think there has to be some sort of interactive session also after my conclusion, the question answer session. I welcome that, and I wanted it to be in that format only. Requesting Razi Bhai to reorganize it. It was very interesting. I would request him to reorganize it in the form of an interactive session. There were two monologues. A very honest monologue by Ejaz Sahab, a detailed, well thought out, well researched monologue by Rashid Sahab, very well conceptualized, very well theorized. It leaves a lot of questions, and the format was very interesting. We were talking about Urdu, but not in Urdu. Most of the comments were in Urdu and Hindi, and also in English. अगर इजाजत दें तो मुझे एक लतीफा याद आ रहा है which would sum up this debate fairly. और लतीफा और गाली अपनी मादरी जबान में ज्यादा लुत्फ देते हैं, तो मैं कुछ उर्दू में इजहार ख्याल कर सकता हूँ। यस सर, गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गो अहेड, because there are a lot of people who are saying why no Urdu in जी Urdu session, मैं- and my apologies to some guys who no are no from South any India. Yeah, but we keep on we can discuss a subject, an issue, or an issue related to a language in any language, yes, so yes sir. I am not with those who say that a debate about Urdu should always be in Urdu language. There may be many people who have been listening this debate who may not be well versed with Urdu. Sure. तो बहरहाल लुबो लुबाब ये है इस डिबेट का। मुझे एक एनेक्डोट याद आ रहा है। कहते हैं पार्टीशन के फौरन बाद जब पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गए, तो हमारी तरफ का जो पंजाब था उसमें ये बहस बहुत जोरों पे चली कि साहब पंजाब की ऑफिशियल जबान क्या होनी चाहिए। तो उर्दू का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की ऑफिशियल जबान हो गई थी और वहां के पंजाब की ऑफिशियल जबान तो थी ही। तो ये था साहब, बहस ये थी कि गुरुमुखी होनी चाहिए कि हिंदी होनी चाहिए, और दोनों फरीकैन अपने अपने पोस्टर जो है वो उर्दू में छापते थे। तो ये मौजूदा सूरत हाल में उर्दू का ये आलम है कि उर्दू पे भी हम एक उम्दा बहस जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में ही कर सकते हैं। यही आलम रेख्ता का भी है जिसका जिक्र एजाज साहब ने। मैं बात जारी रखूं अपनी? Yes, sure, yeah, of course. और अगर अगर कोई साहब इस बीच में सवाल जवाब करना चाहें तो नहीं, उनका खैर क्वेश्चन मकदम है। सवाल जवाब बाद में होगा, आपके बाद होगा। जी जी। तो यही हाल उर्दू का है, जिसे हम कहते हैं कि उर्दू का रिवाइवल। आप उलट गए, वो somehow टच कर दिया आपने, बिल्कुल सो गए आप। अच्छा भाई, ये बड़ा मसला है। मैं आई एम द ग्रेटेस्ट टेक्नो चैलेंज्ड पर्सन ऑन अर्थ। ओरिजिनल अब पे जो मैं पहले सीधा हुआ। जो नहीं नहीं जो पहले आपका ओरिएंटेशन था उसी पर जाइए। जी अब जी, गुड, देखिए। बैक टू नॉर्मल, अच्छा बिल्कुल। भाई, मैं हर तरह से माफी चाहता हूं। मैं स्टेज कोई बात परफॉर्मेंस करने का इतना आदी हो गया हूं कि मैं कैमरे और डिजिटल परफॉर्मेंस और That's बल्कि okay. आजकल एआई सबमिट चल रही है, तो मैं भी यही कहता हूं कि
रघुपति राजा राघव राम क्या है, पति सबको को समेट रघुपति दे भगवान। सभी को संपत्ति भगवान। नहीं, सम्मिट दे सबको समेट भगवान। दे भगवान। सभी या सम्मति न दे, समेट दे दे। अब संपत्ति हो गया। सभी को सबमिट दे भगवान। यस, सभी को, सबको समेट दे भगवान। तो बहरहाल, लेकिन मेरे दो, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा दो सवालात से राशिद साहब से। हम क्या लाशऊरी तौर पे बहस कर रहे थे गोस्ली प्रेजेंस ऑफ उर्दू इन इंडिया। हम इसमें हमने जो दूसरा हिस्सा है जो नेशन स्टेट, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। उर्दू सब कॉन्टिनेंट में उर्दू की प्रेजेंस का क्या हाल है, इज इट गोस्ली और गॉडली। और इत्तेफाक है कि दोनों ही नजर नहीं आते हैं। हाँ, क्या वो लोग कहते हैं कि है पर हमें मंजूर नहीं। तो बहरहाल ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, वेल थॉट आउट, थॉट प्रोवोकिंग conceptualization by Rashid Sahab. It was an education for me as well. um, दूसरे दूसरे उर्दू की जो गोस्ली प्रेजेंस है, क्या इसकी वजह भी तो ये नहीं है कि हिंदी से बहुत करीब है या हिंदी है ये। तीसरे जिस जिस हिंदी का हम जिक्र करते हैं अब, या हिंदी वर्सेस उर्दू डिबेट, जिसके ऊपर भी राशिद साहब ने इजहार ख्याल फरमाया, दरअसल वही असली हिंदी तो नहीं है। और जो संस्कृताइज्ड हिंदी है, और ये बड़ी गलत डिबेट चल रही है, संस्कृताइज्ड हिंदी वर्सेस पर्शियनाइज्ड उर्दू। हिंदी जब तक पर्शियनाइज्ड नहीं होगी, हिंदी होगी ही नहीं। तो उर्दू बहरहाल ये मेरे कुछ ख्यालात थे। वंडरफुली प्रेजेंटेड, वंडरफुली प्रेजेंटेड। जावेद अख्तर साहब के मामले में, राशिद साहब, मैं आपको बता दूं कि वो उर्दू उर्दू का क्या ताल्लुक है हिंदी सिनेमा में, उसमें नहीं बोलने वाले थे। वो मुशायरे के सदर थे और उनको बहैसियत सदर भी शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि वो अथीस थे। तो वो बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई हैं उस सिलसिले में। वो एक बार आप दोबारा रिविजिट कर लें, आप दोबारा देख लें कि हम किसी तरीके से उस इक़दाम को सपोर्ट तो नहीं कर सकते। और वो बेचारे कुछ कहने फरमाने वाले भी नहीं थे उर्दू हिंदी में, ऑल दो वो और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से यही किया करते हैं। लेकिन वो बेचारे सिर्फ सिर्फ सदर थे। और पता नहीं, सदर तो अगर फर्शी निजाम होता है तो उसके बेचारे के घुटने उठने भी बहुत अकड़ जाते हैं, और वो इस मर्ज का शिकार भी हैं। तो मुझे तो इस पे एतराज है कि उन्होंने सदर बनना क्यों कबूल कर लिया था, क्योंकि सदर को बेचारे को सबसे आखिर में अपना कलाम सुनाना पड़ता है और कुछ कहना। बहरहाल, मैं आई वॉज थॉरली इंटरटेन, आई वॉज एजुकेटेड एज वेल। I would like it to be followed up with a free for all debate on status and position of Urdu, not only in India, but to a large extent in India and Pakistan, also the subcontinent. And with a question, is Urdu being revived in Bangladesh as well? Thank you so very much. Feel thoroughly entertained, thoroughly educated. very, very, very interesting. Thank you, Saeed Saab, and I will talk to you on this to have a panel discussion in some session. So, we are coming to question and answer session after this announcement. We will have no coming Saturday, no session, because we have our local Aligarh Alumni Association fundraising. So we all are participating, and a lot of audience will be part of it. That's why we are not having any session. And next to that will be our this is the interaction of gender and education
the educational experiences of minority girls in India. And the speaker is a well-known education expert, Professor Satvinder Pal Kaur from Chandigarh, Punjab University, Chandigarh. She's a professor of education there. And two others joining her are Doctors Sahid Mio from, basically he's from Rajasthan, I guess, and other is Dr. Vijita Rajan, giving the concluding remarks. So after this, over to Dr. Rafat Hussain for moderating the question and answer session. Saeed Saab, stay tuned, and आपने जी भर के छत्ते में हाथ डाला है, तो अब आप झेलिए और राशिद साहब झेलें, and we will be certainly doing a panel discussion at some point on this debate. And Alok Rai was also here. Professor Alok Rai was here. He was listening to that. So I hope that others are also thinking about it. So welcome you all But again. the one who has concluded, can he take part in the debate? I mean, Of course, in the of course. interactive session. अच्छा अच्छा. Yes, of course, all three. अगर तनवीर साहब आना चाहें तो, but all are welcome. Okay, Rafat. जी शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। सो तीनों स्पीकर राशिद अली साहब, तनवीर रजा साहब और फाइनली सैयद आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। So let me speak in both language so nobody complains. I only know two language, so I can speak in only two. तो जनाब जो है सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का शुरू है। आप दो तरीके हैं सवाल पूछने के, या तो आप अपने चैट बॉक्स में जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए, या जो है अपना जो है डिजिटल हैंड रेस कीजिए। तो मैं दोनों बॉक्सेस को मॉनिटर करता रहूंगा, जिस तरीके से वो जो है अपीयर होंगे उस हिसाब से। चलिए मैं सवाल करता हूँ फ्रॉम चैट बॉक्स में। सवाल है अजमल पाशा साहब का। थोड़ा सा टर्की सवाल है, लेकिन राशिद साहब सुनिए। While Urdu speaking Muslim communicate with Urdu speaking non-Muslims, they have to greet them with Assalamu alaikum, which is Islamic. This may not go well with Urdu speaking non-Muslims. They may have to reply as Namaste, which is Hindi. Can't you think that this kind of communication problem linked to Islam are coming the way of Urdu to be a secular language? अच्छा सवाल है राशिद अच्छा, साहब। मैं इस पे तज्जिया इसकी करूं जनाब? मैं जी आप ओके। जी मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि अस्सलाम वालेकुम जो है, या any form of greeting that is there in the society, whether it's hello, assalamu alaikum, how much they are tied to religion. Even prior to emergence of Islam in Arab, assalamu alaikum was a kind of salutation. The people used to greet each other, and the biggest example of it, and the most important example of it, is in the form of shalom in Hebrew language, right, sir? So a religion particularly and primarily, it borrows salutations, right? So when a Hindu says Assalamu alaikum to you, or when a Muslim says to each other Assalamu alaikum, it doesn't matter. I mean, it's just a form of greeting. Assalamu alaikum means that, peace, but like, may Allah have peace upon you, right? So Assalamu alaikum was also used in the pre-Islamic Arabia, for that matter. So I don't think, everything needs to be limited to religiosity. I think that, it's a kind of misnomer. मैं कुछ कह सकता हूँ राशिद भाई? जी लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 वर्षों से जो अर्बन उर्दू इलीट है उसने तो अस्सलाम को आदाब से रिप्लेस कर दिया है।
वो आदाब मोर और लेस फैशन हो गया है। नहीं, ये जो मैं तो अपने जब उर्दू शिया वाले मजालिस में गैर जाया उर्दूदा करता, को और गैर उर्दूदा वाले उर्दू वालों को बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से आदाब करने लगे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं 1980s में जब शिया मजालिस में जाया करता था, तो उस जमाने में भी दोनों चलते थे, सलाम अलैकुम भी चलते थे, आदाब और भी चलते थे। आदाब। राइट। तो आदाब इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सैल्यूटेशन। जी जी। उसमें बट कोई लोग कहते हैं ये खासा सेकुलर सैल्यूटेशन है ये। नहीं, सलाम अलैकुम भी मुझे सेक्युलर ही लगता है। अच्छा, एक और सवाल है जो कि तनवीर एजाज साहब की बात को कहेगा कि हैज उर्दू एवर सेक्युलराइज्ड इटसेल्फ? आई थिंक द आंसर लाइज इन दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी जबान जो है सेक्युलर और कम्युनल एंगल से नहीं देखी जानी चाहिए। लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस, राइट, प्राइमरली, एंड हाउ पीपल मेक देम, राइट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि उर्दू सेक्युलराइज का कहने का मतलब ये है कि उर्दू एक तो मदरसे में पढ़ाई जाती है, मान करके चलते हैं हम, उर्दू मदरसे में पढ़ाई जाती है, तो ये लैंग्वेज सेक्युलर नहीं है कि है? ये एक बहुत अजीब सा सवाल है, राइट। मुस्लिम्स लोग उर्दू बोलते हैं, ये भी एक अजीब सा सवाल है। जहां लेकिन तक आप ये देखिए भाई, लामज़हबियत उर्दू में जितनी है शायद ही किसी जबान में हो। अब खुदा जबान से का मजहब शोखी और तो हम इस लामज कदर करते हैं, खुदा से, वाइस से, मुल्ला से, I mean, yeah, बदमाश से। I can support you on that. जी जी जी। हम चलिए, खैर जितनी ये जो है, जितनी शोख और सेकुलर लैंग्वेज उर्दू है, शायद ही कोई जबान हो दुनिया की। जी जी, नहीं, खैर अब ये मैं डिस्कशन इतना पैनल नहीं है इस इसेंशियलाइज नहीं वक्त। करता हूँ किसी भी, सॉरी, मैं इतना इसेंशियलाइज नहीं करता हूँ किसी भी जबान को। सब जबान की अपनी अपनी खूबसूरती है। हम लोग चूंकि उर्दू में जिंदगी जी रहे हैं, तो उस एतबार से देखा जाए तो हम लोग उर्दू को एक अलग पेडेस्टल पे देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा गालिबन बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि अगर तमिल आप सुनेंगे या कोई और जबान सुनेंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो लोग भी यही क्लेम करेंगे। एक जमाने में पता है क्या चलता था कि दुनिया की सबसे शीरीन जबान क्या है, विच इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? तो हम लोग का वन आंसर होता था पर्शियन। And when I studied in JNU and I spoke to people who were learning French language, and they said, French is the sweetest language in the world. सो तो इस तरह और की, मैं एक बांग्ला। लाइक, छोटा सा इस पे ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जी जी, क्या कैन आई चिप इन? एक छोटा सा यस प्लीज, ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जी यस जी सर, जी। यस सर। जी जी, मेरा ये जो कहना था कि उर्दू जो है वो सेकुलराइज नहीं कर पाया है, आ, उसके वजह ये है कि देखिए, कोई भी लैंग्वेज जो है, अगर वो वक्त के साथ अपने आप को क्रिएटिव नहीं बनाता है, तो थोड़ी सी परेशानी आती है। और लैंग्वेज जो है वो कई बार एक तरीके से, जो मैं वो रिलीजन से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ जो लोग उस इमराना। जो जो वो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, जो भी वो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, जो वो वर्ड बोलते हैं, वो, अब जैसे मैं एक बार ना जेंडर जेंडर पे हम लोग एक बुक लिख रहे थे, उसका जेंडर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस उसका टाइटल था, और उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहे कि इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन इस बुक की आनी चाहिए, लोगों ने यहाँ पे कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से छपनी चाहिए। अब जेंडर का कोई हिंदी वर्ड नहीं मिला। फिर हम लोगों से ये हुआ कि चलो जेंडर का उर्दू वर्ड डाल दिया जाए, तो उर्दू वर्ड भी कोई जेंडर का नहीं मिला। अब हम लोगों ने फिर बाद में कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों में जेंडर ही वर्ड लिखा जाए। पर ये एक तरीके से आप समझिए कि अगर हमारे पास वो क्रिएटिविटी रहती, हम घूम फिर करके फिर इंग्लिश वर्ड यूज करने लगते हैं। हमारी क्रिएटिविटी जो है वो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेकुलराइजेशन। सेकुलर वर्ड का कोई उर्दू वर्ड आप हमें बता दीजिए। ये उस जमाने की बात है जब जब आजादी के पहले, जब ये मीडिया वाले लिख रहे थे वर्ड सेकुलर, अब वो बार बार ला मजहब वर्ड यूज करते थे सेकुलर को। और एक अच्छी खासी ये बात फैल गई कि लगता है आजाद होगा देश तो हमारी मजहब छीन ली जाएगी। और वो जो सेकुलर है वो मजहब छीनने की बात तो खैर कभी वो हुई नहीं थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो
वर्ड्स हैं उर्दू के, जो लफ्ज है, उसको एक तो डिकंस्ट्रक्ट भी बहुत जरूरी है ना। जब तक आप डिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे और उसको एक नए कंसेप्चुअल मिलियू में नहीं डालेंगे, तो फिर शायद वही कारण वही वजह बन जाती है डिसअपियरेंस की। बहुत शुक्रिया। पर वो अगर जेंडर में रा जोड़ दें तो हिंदी में लफ्ज है राजेंद्र। चलिए बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब का सवाल हाथ उठा हुआ है। शाहिद साहब। जी, थैंक यू। तो मैं आधी अंग्रेजी में और आधी उर्दू में हिंदी में बात करूंगा जी, प्लीज। यही रिवाज है। जी हाँ, तो ये जो राशिद साहब ने बात की थी कि मरसिया भी नॉन मुस्लिम लोगों ने लिखा है, तो उसके ऊपर तो मैंने बड़ी तहकीक की है और मैं नेक्स्ट वीक संडे रामायण के ऊपर बात करने वाला हूं, जो उर्दू में रामायण लिखी गई है। और क्यों लिखी गई है, बल्कि एक रामायण जो 1850 में पब्लिश हुई थी, उसके 17 एडिशंस पब्लिश हुए हैं ओवर द नेक्स्ट 70 इयर्स। तो आखिर उसके पढ़ने वाले कौन थे? क्या वो मुसलमानों के लिए लिखी गई थी? ऑब्वियसली नॉट। क्या वो मुसलमानों को कन्वर्ट करने के लिए लिखी गई थी? जी नहीं। बल्कि कई रामायण ऐसे लिखे हुए हैं जिनके चैप्टर्स के बीच में भजन कंपोज किए गए हैं, जो मंदिरों में गाए जाते थे। अच्छा, एक तो मैं वो बात कर रहा हूं आपको। दूसरी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिसका ऑब्जेक्टिव था हिंदू कल्चर सिखाने का अलोंग विथ सेक्युलर एजुकेशन, पहला डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स का जो बना, उर्दू का था। और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एंड नाम जरा गौर से सुनिए, मैं नाम बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, मौलवी महेश प्रसाद। जी शाहिद साहब, सवाल की तरफ आइए। अच्छा, थैंक यू। तो मैं फकत बोल रहा हूं कि ये जो सेक्युलराइजेशन की बात है, ये दोनों तरफ से हो रही है। और ये लैंग्वेज का सेक्युलराइजेशन नहीं है, बल्कि कल्चरल सेक्युलराइजेशन है। और हमको जरा ब्रॉडर सेंस में सोचना चाहिए, to reach out and include, and some of this secularization includes uh, a friendliness of the script, and Urdu script is not very friendly. ओके, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे आप जनाब, बहुत तीनों साहिबान? या मैं इनकी हर बात से जो है मुत्तफिक हूँ और बस बाकी राय है मेरी। सिर्फ ये कि कोई भी जबान की स्क्रिप्ट जो है बहुत ही फ्रेंडली नहीं है। ये एक तरह का कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट है जो कि उस जमाने में दिया जाता था कि उर्दू बहुत ही एलिगेंट लैंग्वेज है, उर्दू बहुत ही एस्थेसाइज्ड लैंग्वेज है, एस्थेटिका इसका बहुत ही स्ट्रांग है। और इसमें जो है कैलीग्राफी है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसकी वजह से ये खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन इट इज नॉट अमेनेबल टू अदर थिंग्स, विच आई थिंक इज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है ये आर्ग्यूमेंट ठीक। लैंग्वेज तो का। ऐसी ये शिकायतें तो हिंदी के खिलाफ भी रही हैं। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम जी जी। लैंग्वेज ये का हर नहीं। लैंग्वेज के वो साथ हो देव सकती है, सबकी नागरी स्क्रिप्ट को भी कोई बहुत आसान जो और है या बहुत सलीस स्क्रिप्ट नहीं माना गया है। वो बल्कि मजाक इसमें में मैं शेर सिर्फ भी एक है, चीज था लिखा बोलूंगा, गया मेरा नाम है अमाल हिंदी में, मैं एक बात कहूंगा जो कोई पढ़ न एजाज सका मिल साहब ने। गई फिल्फोर नजात। जी जी मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, जैसे कि एजाज साहब ने भी बताया था, जस्ट स्पोक अबाउट इट, दैट जेंडर जेंडर का जो है उर्दू और हिंदी में उनको कोई सिनोनिम या फिर कोई जो है कॉग्नेट नहीं मिला। लाइक ही कुड नॉट फाइंड अ कॉग्नेट ऑफ
gender in Urdu and Hindi. So this is not the problem of language, it's the problem of concept. Like secular word को अगर हम ला मजहब लिख रहे हैं, राइट, तो वो ला मजहब जो है सेक्युलर का एक जो डेफिनेशन है उसमें आएगा। सेक्युलर का दूसरा जो डेफिनेशन है विच इज नेहरूवियन सेक्युलरिज्म काइंड ऑफ अ थिंग, सर्वधर्म समभाव, जिसमें कि हम मजहबी इश्तराकियात की जो है बात कर सकते हैं, राइट। So it would be a very different plank altogether. So I don't think language is के अंदर का ये evolution का प्रॉब्लम है। मुझे उससे ज्यादा लगता है कि ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, कल्चरल कंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमाल साहब, आपने ख्वाहिश जाहिर की है। कमाल साहब या कमल साहब बकौल आलम साहब के, सैयद आलम साहब। नहीं, डबल है तो कमाल है। और कमाल साहब, अब कमल में भी कमाल है, कमाल में भी कमल है। आई हैव अ क्वेश्चन। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम या आदाब। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, और क्या सेक्युलर होगा इसमें और क्या नहीं होगा। एनीवेज, मेरा नाम है कमल सिंह और मेरे लिए ये सेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। राशिद साहब से क्योंकि हम एक ही शहर में रहते हैं तो उनसे मिलना मिलाना रहता है, तो मेरी गुजारिश होगी कि मेरा ये जो सवाल है इसके बारे में यदि सैयद साहब या जो दूसरे जनाब बैठे हैं अगर वो इसके बारे में अपनी राय रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे रंग होते हैं, एक ब्लैक हुआ एक वाइट हुआ, और इसके दोनों के दरमियान के रंग को हम कहेंगे जैसे कि एक ग्रे शेड आता है। तो जब ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाते हैं या व्हाइट से ब्लैक की तरफ आते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो बीच में एक ग्रे शेड का एक पोर्शन होता है, ना वो इस तरफ होता है ना वो उस तरफ होता है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो घोस्टली प्रेजेंस ऑफ उर्दू जो है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जैसे कोई स्पीशीज होती है, वो कहते हैं कि कितनी स्पीशीज खत्म हो गई, कितनी चीजें खत्म हो गई इस पृथ्वी के ऊपर से, इस अर्थ के ऊपर से। तो जो चेंज है, इफ समथिंग इज कांस्टेंट दैट इज चेंज, लाइक पीपल से, तो क्या हम उस दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं कि एक ग्रे सा शेड आ रहा है, और उर्दू जो पहले थी वो चाहे व्हाइट में मान लें या ब्लैक में मान लें, और अब वो दूसरी तरफ जा रही है और वो एक ग्रे शेड में आई हुई है जहां पर कि उसकी प्रेजेंस है भी है, नहीं भी है, या घोस्टली प्रेजेंस है। तो कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि ये नहीं रहेगी आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, और इसका कुछ और ही रूप, इसका कुछ और ही रंग, नया कुछ इख्तियार हो जाएगा? इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था। आई डोंट नो, जो मेरे जहन में है वो आपको सैयद साहब अगर कुछ समझ में मैं आ सका है तो। जी, चलिए अगर पहले इजाजत हो, सैयद साहब से राशिद बात भाई करते हैं। इजाजत है? कमल साहब, हाँ जी। मेरे ख्याल से आपका खदशा दुरुस्त है। हो सकता है कि रस्मुल खत के लेवल पे उर्दू आने वाले 40-50 सालों में खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि जबान हिंदी से बहुत करीब है, बल्कि हिंदी इस जबान से बहुत करीब है, तो और बोली बहुत जाती है और लाशऊरी तौर पे बोली जाती है। जब हम सुबह कहते हैं, शाम कहते हैं, रोजमर्रा में जो हिंदी बोली जाती है वो पर्शियनाइज्ड हिंदी है। तो जबान तो कभी खत्म नहीं होगी। अब मैं इसको ये नहीं कर पा रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जबान खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये हिंदी का हिस्सा है, या जबान खत्म इसलिए नहीं होगी कि उर्दू हिंदी का बहुत बड़ा हिस्सा है, या हिंदी ही उर्दू का हिस्सा है। तो जबान रहेगी, लेकिन जबान का ताल्लुक जब माश से नहीं होता तो वो तनज्जुल की तरफ जाती है। और ख्याल रहे कि जो जो हो सकता है मैं गलत हूं, राशिद साहब इजहार ख्याल फरमाएंगे, जो जो हिंदी ने उर्दू के साथ किया है वो माजी में उर्दू ने फारसी के साथ किया था। तो
फारसी ग्रे शेड में आती चली गई और अब वो ग्रे भी नहीं रह गई है। एंड फॉर दैट वी वर ग्रेटफुल टू उर्दू। उर्दू जो अब ग्रे शेड में जा रही है तो वो भी ग्रेट, बिकॉज वी आर ग्रेटफुल टू हिंदी। तो ये हो सकता है राशिद साहब खासी उससे बताएंगे कि ये नेचुरल फिनोमेनन भी हो सकता है, ये अम, एक तारीखी फिनोमेना भी हो सकता है। जी जी। आइडियली जो इस पे जो मेरा अपना जो है, जो हेजेमनिक ऑर्डर जो होता है, उसमें जो रॉयल लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज रॉयल पैट्रोनेज के ऊपर जो जीती है, उसका जो तनजुल होता है, उसका जो जवाल है, उसका जवाल जो है मतलब कहीं ना कहीं से उसके रिचेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। पर्शियन की रिचेबिलिटी ईरान में बहुत है। जी। पर्शियन की रिचेबिलिटी नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं रही है। इट वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज। तो उसका जो जवाल है, और जो उर्दू का जो है, जैसे दूसरी जबानें जो है, जो वर्नाकुलर्स जो है यहाँ पे इमर्ज कर रहे थे, तो हिंदवी, आपकी ब्रज, अवधी, उर्दू, हिंदी, ये सब की सब जो है वर्नाकुलर्स में ये जबानें आई हैं, वो इमर्ज कर रही थी। तो इनकी वजह से पर्शियन का जवाल तो नहीं हुआ है जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि एक जैसे जैसे मुगल एरा का ड्विंडलिंग हुआ है, द वे इट हैज ड्विंडल, सो लैंग्वेज ऑल्सो ड्विंडल along with the royal patronage, right? It had received once upon a time. So Urdu did not do anything to Persian. Urdu did not do anything to Sanskrit. Urdu did not do anything to any other language, right? That हाँ, उर्दू का जो है, जो मुझे जो उर्दू ने जिस दूसरी जबानों को जो मतलब डिक्लाइन की तरफ ले गई है, वो हो सकता है कि अवधी हो, वो हो सकता है कि ब्रज हो। पर्शियन तो कहीं से नहीं होगी, वो हेजेमनिक ऑर्डर में ही फिट नहीं होगा ना। चलिए, शुक्रिया। मैं कुछ इस पे ऑब्जर्वेशन दूं। जी। I think it's very difficult. It's very difficult in India, which I also argue. It's very difficult that in India, you can uh, eliminate Urdu, right? I mean, because Urdu, the language, is also linked with certain kind of ideology, right? In a sense that when we have an ideology which promises pluralism, which promises diversity, Urdu will flourish, right? But when we have an ideology which tries to homogenize, then of course Urdu will have a sort of a beating. It's very interesting to know that, I mean, since Rashid Bhai has given examples of Bollywood, see, Lata Mangeshkar, when she started singing, she started learning Urdu, both, not just only in terms of pronunciations, but also in terms of writing and reading, right? So, Urdu, the Indian, I mean, just imagine the word Hindu, right? As long as the word Hindu is there, the word Hindu is given by Persian, right? So can you eliminate Persian and Urdu from Hindi? जैसा कि सईद साहब ने कहा, it's almost impossible, right? देवनागरी और उर्दू स्क्रिप्ट जो है वो इस कदर मिले हुए हैं कि it's almost impossible to dissociate both of them, right? So it's just a matter of power and ideology. As I said, this contemporary times when we have conservative right-wing governments who are pathologically homogenizing one culture, one language, etc., etc. Right. So then, of course, but also at the same time, I said I have hope. आप देखिए, लिटरेचर कम नहीं हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत खुले हुए हैं उर्दू सीखने के हमारे यहाँ। मैं इसको जानता हूँ। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। बहुत जगह पे उर्दू जो है उसकी उसकी क्लासेस होती हैं अलग से। स्कूल्स में इट हैज बीन डिस्करेज्ड,
colleges it is being sort of discouraged, but there are people who are trying to learn Urdu because of its aesthetics, right? Because of its जी तनवीर romantic साहब बहुत towards it. शुक्रिया। जी जी हाँ, शुक्रिया। मैं कुछ कह सकती हूँ? कौन है? हामिदा बेगम साहिबा? जी, हमीदा आपा बोल रही हूँ। जी, जी इजाजत हो फरमाइए। तो? हाँ, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उर्दू माशाअल्लाह जिंदा है, जिंदा रहेगी। अब मर्जिया ये सारी जो आप लोग बहस हो रही है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन मेरा अपना 40 साल का जो तजुर्बा रहा है उर्दू पढ़ाने का, वो आज भी यही कह रहा है। मेरी बहुत सारी क्लासेस अभी हो रही हैं, मेरे 90% जो तुलबा हैं वो हमेशा हिंदू रहे हैं, नॉन मुस्लिम रहे हैं, मतलब उनका मजहब इस्लाम नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उर्दू जिंदा है और हमेशा रहेगी। और जहाँ तक रस्मुल ख़त का सवाल है जो आप लोग कह रहे हैं, और जैसे सईद भाई ने कहा कि ज़ुबान तो रहेगी, रस्मुल ख़त शायद ना रहे, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है सईद भाई। अगर हम रस्मुल ख़त नहीं सिखाएंगे लोगों को, मैं जहाँ भी कहीं पढ़ाती हूँ, और अभी जैसे इसमें IIT गांधीनगर में जो उर्दू पढ़ाई जा रही है, मैं जब पढ़ा रही थी कोविड से पहले, मेरे पास 119 तुलबा थे। तो इस वजह से, लेकिन और मेरा जोर इस पे बहुत ज्यादा है कि बगैर रस्मुल ख़त के जुबान जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ कहीं भी हम उर्दू पढ़ाएं, हम साथ साथ में रस्मुल ख़त की क्लास जरूर रखें। सिर्फ इतना ही बेशक कहना बहुत है। और हाँ, बहुत उम्दा। हाँ, कि ये थैंक यू हमारी जिम्मेदारी है। जी। और ठीक है, रस्मुल ख़त की जो आप बात कर रहे हैं कि उर्दू लिखना मुश्किल है, और ये वो, कौन सी जुबान लिखना मुश्किल नहीं है? हिंदी जी में भी आप जी देखें तो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा और वो सारी चीजें जो गलतियां जी होती रहती हैं लोगों से। उर्दू सिखाना बहुत आसान है, और मैंने सिखाई है। मेरी वेबसाइट पे दुनिया बहुत लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो इसलिए बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उर्दू माशाल्लाह बहुत शुक्रिया हमीदा आपा, बहुत हाँ, शुक्रिया। हाँ, और अपनी शीरीनी की वजह से ज्यादा जिंदा रहेगी। शुक्रिया भैया, बहुत चल खुदा। एक सवाल और है एम्बेसडर इशरत अजीज साहब का, डज उर्दू रिक्वायर गवर्नमेंट असिस्टेंस टू सर्वाइव? नो, कैन ए लैंग्वेज बी पॉपुलराइज्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट? जी फरमाइए राशिद साहब, सईद साहब और तनवीर साहब। जबान का कि सर्वाइवल का एक हिस्सा तो पैट्रोनेज के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। लाइक it would definitely depend upon scholarships, endowments, funding, and so many other things for many events to be organized in for that particular language, right? So एक पैट्रोनेज तो ये भी है, लेकिन सिर्फ पैट्रोनेज से जबान जो है सरवाइव नहीं कर सकती है। इट नीड्स टू इवॉल्व विद सेल्फ। लैंग्वेज का क्या एवोल्यूशन होगा वो तो लोग ही करेंगे, राइट? वो कैसे इवॉल्व करेगी, और साथ में जो उसके जो एक पॉलिटिकल पावर है, एक हेजेमनिक पॉलिटिकल पावर है जिसकी डॉक्टर तनवीर एजाज ने भी बात की है, वो अगर होमोजेनाइजेशन की तरफ ले जा रहा है लैंग्वेज को, मार्जिनलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, तो फिर जो है लैंग्वेज सरवाइव नहीं करेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी जबानें जो है मिट गई है। अक्काडियन जो है मिट गई है। अक्काडियन जो है वो आज से 4,000 साल पहले बोली जाती थी मेसोपोटामिया में, राइट? सो वो लैंग्वेज जो है अब एक्सटिंक्ट हो गई है, वो है ही नहीं, राइट? हम सिर्फ जो है उसके ट्रेसेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में हमें पता है। Probably after 1,000 years, all the languages that we speak today may no longer exist, or maybe after 500 years, right? लेकिन एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके थ्रू किसी भी लैंग्वेज को कितना मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो एक दूसरा क्वेश्चन है। ये नेचुरल कोरोलरी नहीं है। लाइक लैंग्वेज का जीना, लैंग्वेज का मरना इज जस्ट लाइक द इंटेंसिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत ही अननेचुरल चीज हमारे पास आ गई है, जिससे पूरी दुनिया में खलफशार मचा हुआ है, राइट?
लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे मतलब अर्थ के हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन देयर इन 10,000 years, इन 15,000 years. ग्लोबल वार्मिंग विल बी देयर, राइट. लेकिन ये 200 साल में नहीं होगा खत्म, राइट. ये है जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में चलिए, आता है. बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इल्तफात साहब, उसके बाद जब्बार साहब, तैयार रहिए। आप, आपके सवालात हैं कुछ? बहुत शुक्रिया एक रफत मियां। इस पे जी। एक बात कह रही थी मुझे कि अगर जिंदा हमें उर्दू को रखना है तो उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी हम नहीं देख रहे कोई उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल उस तरीके से हो रही है, जैसे और अलग इंग्लिश लिटरेचर फेस्टिवल है, दलित लिटरेचर फेस्टिवल है, पर उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल नहीं देख रहे हम। नहीं, अभी हुआ मैं था अलीगढ़ में एक। मैं थोड़ी देर के लिए इस पर तबसरा कर सकता हूँ। जी जी, आपके पास कितना, हाँ, 1.5 ये मिनट है? जितने लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं और ये जितने जश्न होते हैं उर्दू से मुताल्लिक, अ, अगर राशिद साहब गौर व फिक्र फरमाएं, ये जबान के जवाल का भी नतीजा है, या जबान के जवाल का भी एक एलिमेंट है। ये तब कामयाब होते हैं जब लोग वो जबान पढ़ नहीं सकते, जब रस्मुल खत मादूम होता जा रहा है। तो अब मैं उर्दू नज़में और मरसिया और गजलें पढ़ नहीं सकता, तो मैं जश्न उर्दू में उसको सुनने चला जाऊंगा। तो जब लोग एक जबान से मोहब्बत करते हैं, उसको सीखना नहीं चाहते, या किसी वजह से वो उनके रोजमर्रा का हिस्सा नहीं है, तो वो उसको सुन के तस्कीन हासिल कर लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि लिटरेचर फेस्टिवल, जश्न उर्दू, जश्न गालिब, ये इसका भी नतीजा है कि लोग अब इस जबान को लिखना और पढ़ना भूल चुके हैं, लेकिन सुनना जारी है। जी, राशिद साहब, कोई कमेंट है या बात में वजन है? वजन तो है चलिए, इसकी बात में. नहीं नहीं, बिल्कुल वजन है। इल्तफात भाई। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही उम्दा महफिल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। मेरा एक ख्याल है काफ़ी अरसे से कि उर्दू इज़ अ डाइंग लैंग्वेज। उर्दू की इब्तिदा हुई थी गंगा जमनी तहजीब, यूपी और सीपी और बिहार से। वहाँ से उर्दू लिखना और पढ़ना ख़त्म हो चुका। जो ज़बान अब इंडिया में यूपी और बिहार में बोली जाती है वो उर्दू नहीं है, वो मिक्सचर है हिंदी और उर्दू का, और उसमें हिंदी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी उर्दू मर रही है क्योंकि जो उर्दू स्पीकर्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहसास हो गया है कि हम बलोची हैं या पंजाबी हैं या पठान हैं या सिंधी हैं। तो उर्दू मेरे ख्याल से इज़ अ डाइंग लैंग्वेज। इस पे आप लोगों का क्या ख्याल है? इस पे आपने तो सवाल सुन चुके हैं आप कई मरतबा। कुछ कोई कहता है कि डाएंगे, कोई कहता है नहीं है। मैं बहुत दफ़ा ये सवाल करता हूँ और अभी भी मैं फर्मली बिलीव नहीं, करता हूँ कि इट्स अ डाइंग लैंग्वेज। अभी इसी सेशन में कई लोगों ने जो है मुख्तलिफ राय पेश की है। चलिए, खैर, दोनों इसका जो है, पर- मैं, if I have to just answer in one sentence, ओके। therefore we have organized this lecture. Why Urdu has this ghostly presence, right? So whether it's dying or not dying, language cannot die completely in a given frame of time, right? It will exist in one form or the other form, right? Unless or until it is completely extinct, like so many other languages of the past. तो अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, सवाल ये है. और इसी सवाल से जुड़ा हुआ ये आज का ये लेक्चर है कि ये घोस्टली सेंस में एग्जिस्ट कर रही है. तो आज तो घोस्टली तो है ही, विच मीन्स दैट इट हैज डाइड एंड इट्स घोस्ट हैज अपीयर्ड ऑल अराउंड अस. सो इट्स अ काइंड ऑफ स्पेक्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस लैंग्वेज. स्पेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, स्पेक्टर हाउंड्स अस, हाउंटोलॉजी वाला. चलिए, बहुत शुक्रिया। सही साहब मुस्कुरा रहे हैं कुछ? अ, राशिद साहब से इत्तेफाक रखता हूं मैं। चलिए। जबान तब्दील होती रहती है, जबान जी जी। मरती नहीं है। और अगर जबान जब मर भी जाती है तो वो तारीख का हिस्सा रहती है। तो
तो भी अभी भी बहुत से लोगों को, खासकर जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, उनको फारसी जानना जरूरी है। तो फारसी जब हिंदुस्तान से कमोबेश तकरीबन नापैद हो चुकी है, तब भी बहुत से लोगों को ये जबान जाननी जरूरी है। यही यही आलम उर्दू का है। हमारी माशी जिंदगी से अफसोसनाक पहलू है, इसका ताल्लुक खत्म हो चुका है, या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इसकी एस्थेटिकल वैल्यू है, उसकी वजह से ये जबान, फिर वही जो मैं अपनी बात दोहराऊंगा, उन लोगों के जहन और शऊर में भी जिंदा है जो इसको लिखना पढ़ना नहीं जानते। वह बस एक एक किसी साहब ने कहा था कि क्या उर्दू मर रही है, तो उन साहब ने कहा कि भाई अगर उर्दू मर रही है तो मैं भी वैसे ही मरना चाहूंगा जैसे उर्दू मर रही है। दैट्स नाइस। चलिए, बहुत शुक्रिया। जब्बार साहब, Okay. डॉक्टर अब्दुल जब्बार, आर यू रेडी नाउ? Yes, I'm ready. So I'm an outlier here. I'm from Tamil Nadu. I speak only Tamil and English, two languages. I think Tamil. I think I was having I was having similar kind of the understanding. So clearly the languages, the major languages in India, Tamil is one of them, classical language like Urdu. I think it's in terms of Tamil, there's a protector in terms of the state governments, Tamil Nadu government. So I think in addition to that, I live in Atlanta, so we have a sangam. The literature, Tamil literature goes back 2,000 years ago. So one of the oldest languages, apparently. So the literature is very rich. That is kind of keeping it really going in the Indian diaspora. There's Tamil Sangams. We organize meetings to kind of create a kind of leeway, kind of bridge to younger generations. So I think it's a thriving that way. I think it's a very similar. I didn't know. I don't know anything about Urdu community. So maybe similar things are happening as well in terms of intellectual exposition, literature. The recently, I think there's a controversy about the Tamil language being a barbaric language. This is, this is the apparently Periyar made that statement. That is because he felt Tamil language lacks scientific kind of exposition of ideas. So that was his take on it, but it's also made it to the parliament. Apparently, there's the finance minister for Tamil Nadu. She made some references, and then another actor, Kamal Hassan, made references to that insult. So I mean, and I'm really encouraged by it's also ghostly. I think if you, I don't know, there's a language. That's why I just came to listen to what is the ghost about the language. So I don't see any ghost. It's still live and thriving, and that's what my take on it. Thank you very much. चलें, शुक्रिया। राशिद साहब, नीरज लाल साहब। हेलो, नीरज साहब को बुलाओ भाई। जी जी। हेलो जी। मैं एक सवाल मेरा है, बात हो रही है उर्दू के घोंसली प्रेजेंस की, लेकिन अभी सैयद साहब ने कहा कि जब हम अपने मन की बात कहते हैं, जब तहे दिल से कुछ कहना चाहते हैं, तो मादरी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। और अभी वो जनाब रशीद साहब ने कहा कुछ कमोडिटी और कुछ इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी बताई। देखिए, जब बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, तो पहला सवाल होता है, सब्जी वाले से कहते हैं वाजिब दाम लगाओ। किसने सुना उचित दाम लगाओ? कितने लोगों ने सुना है कि उससे बात करते उचित दाम लगाओ? किसी ने नहीं। मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला। दूसरी बात, जब आप जूसी गॉसिप करते हैं, बोले भाई आजकल तो चल रहा है, तो बोलते हैं नाजायज संबंध है।
कभी सुना कि अनैतिक संबंध की बात कोई करता है? वो अखबार में छपता है। तो उर्दू मर नहीं सकती। उर्दू हमारे रोजमर्रा के रग रग में बसी हुई है और उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज हम जिसको हिंदी बोलते हैं एक्चुअली वो उर्दू है। हम ये समझते नहीं है कि हम उर्दू बोल रहे हैं। हम आपने किसी को सुना ये कहते कि तुम किस स्थान को जा रहे हो या किस स्थान पर रहते हो? सवाल होता है तुम किस जगह जा रहे हो, किस जगह रहते हो। मैं इस जगह रहता हूँ। मेरठ की जो खरी बोली, जो हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है, उसमें भी आप बोलते हैं मैं इस जगह रहता हूँ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, नहीं बोलते। तो उर्दू जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में घुली और मिली हुई है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और उर्दू मर नहीं सकती। प्रेजेंस घोषली नहीं है, प्रेजेंस हर जगह है। आप कहते हैं कल्चरल स्फीयर में प्रेजेंस घोषली है। किसी शादी में चले जाइए, जो गाना गाते हैं नाचने के लिए वो सब उर्दू पर गाना गाते हैं। छाप तिलक सब छीने रे, और सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यही गा के लोग नाचते हैं ना। गुड कभी गुड इसमें सुना है गुड कि अच्छी बात है नीरज गुड साहब। नीरज संस्कृत साहब। का संस्कृत का गाना सुना के किसी ने नाच के देखा है? किसी को ओके बता दीजिए। अच्छी ओके गुड। नहीं है। तो अच्छी सर, बात है, मेरे ख्याल में सब लोग किसी इत्तेफाक करते हैं इस बात से। किसी भी स्फीयर में उर्दू का प्रेजेंस जितना ज्यादा है, किसी लैंग्वेज का नहीं है। तो इसलिए उर्दू मर नहीं सकती। और जहाँ तक रस्मुल खत की बात है, तो फिर अपनी तारीफ नहीं करेंगे, बट 60 साल की उम्र में भी हम रस्मुल खत सीख रहे हैं। तो चलिए कहीं हो ना कहीं, गया। कहीं ना कहीं वो चीज है उस जुबान में। ये अच्छी हमारे बात है नीरज साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में किसी को भी, हर एक को इत्तेफाक है एक आपकी बात। शेर है नीरज साहब, बस एक शेर बोलूंगा मैं। उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं दाम, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। ये तो एक शेर है दाग साहब का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि उर्दू जबान मर रही है। नहीं, अभी गालिबन नहीं बहुत लोगों ने कहा कि घोस्टली मरने डाइंग एग्जिस्टेंस का एक लैंग्वेज जो है, घोस्टली या एग्जिस्टेंस का मतलब जो है, वो एक बहुत ही ऑफिशियल और एक ट्रेजेक्ट्री है, हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री है, जिसमें कि उर्दू लैंग्वेज को अंडरमाइन किया गया है। वो उर्दू अपनी लैंग्वेज जगह है। है, वो हाँ? ठीक है, मान वही आपकी बात हम सही है। लोग हम लोग वही बात कर रहे थे यहाँ पे, मरने की बात नहीं की है। नहीं, लेकिन आज का टॉपिक है घोस्टली प्रेजेंस। तो हम, मेरा ये कहना है कि प्रेजेंस घोस्टली नहीं है, प्रेजेंस बहुत प्रोमिनेंट है। अरे नहीं, नीरज राशिद साहब साहब, हो दलाल गया साहब। हो गया, अब आगे बढ़िए। हो गया। सर, कोशिश कोशिश है उर्दू को आज के हाँ, डेट में, सर कोशिश है उर्दू को किसी प्रिजन में रखने की, हाँ, ये बात सही है। इनकारसरेशन करने की ये जरूरत है। ये बात सही है, ये बात सही है। ये कोशिश 200। जारी है, लेकिन हाँ, लेकिन जो एकदम। है लेकिन ये जो कोशिश है, मुझे नहीं लगता है कि चूंकि ये इतना सफल पेवस्त होगी। है ना हमारे कल्चर में, सही कह रहे हैं कि वो उर्दू कभी प्रिजन में जा सकती है या वो नहीं जा एग्जाइल हो सकती। सकती है, नहीं आ, जाएगी। नहीं जाएगी। चलिए चाहे आगे कितनी भी बढ़िए आगे कोशिश करे। बढ़िए आगे बढ़िए। रफत। जी, चंद मिनट बाकी हैं, कुछ एक दो सवाल और हैं लोगों के। हाँ, वो अलमास सही। जी जी, उनका नंबर बाद में आएगा। ये अब्दुल रऊफ साहब फरमाते हैं कि उर्दू अदब में कमोवेश सभी मुद्दों पर बात की गई है, किंतु भारतीय मुसलमानों में इतनी भयंकर जातवाद है कि उसके बावजूद उर्दू अदीब और शायर इस पर चुप्पी साधे नजर आते हैं। ऐसा क्यों? ये पॉलिटिकल सवाल है, बोलिए जनाब। ये अब्दुल रऊफ साहब का सवाल है। नहीं, बहुत सारे अफसानों में, बहुत सारी नावलों में मुसलमानों में जो जातिवाद है उसका जिक्र हुआ है, उस पे बहस हुई है, उस पे मुबाहिसे हुए हैं। अब आप चाहें कि एक बहुत बड़ा जखीरा मुसलमानों में जो जातिवाद है कि नहीं है, वो है तो किस किस लेवल पे है। तो उसने कोई बहुत मास लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया है और ये जबान की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन
जातिवाद पे बहस मुबाहिसे इशारतन मजाक के फॉर्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो उससे उससे उर्दू उर्दू अदब ये अक्सर खाली नहीं है। इनफैक्ट मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो कफन जो है 1936 में लिखा जी गया है, जी जी जिसके बारे में हमारे मैनेजर पांडे साहब, जो कि हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े नकाद हुआ करते थे, अब तो रहे नहीं साहब, उनका कहना है कि ये पहला दलित लिटरेचर है। जी जी कफन जो है उसको उन्होंने कहा, वो जो आज से ऑलमोस्ट 90 साल पहले लिखी गई थी टेक्स्ट, राइट, कहा कि उसको एक दलित लिटरेचर है, वो द पहला दलित लिटरेचर है। when the word Dalit itself was not coined, जी मतलब जी, वो वो जो है बाद में अपने हुआ। जो है वो डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, राइट, ये तब की हम बात कह रहे हैं। उर्दू, देखिए, एक जमाने में एलिगेंट लैंग्वेज तो थी, ये बात तो मतलब जाहिर सी है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। एलिगेंट थी, थोड़ी सी कोर्टली थी, उसके अंदर शीरी और एक स्पेक्टेक्युलर लैंग्वेज थी, जैसा कि है। लेकिन कुछ कुछ लिटरेचर ऐसे भी प्रोड्यूस हुए हैं जिसमें कि, और खास करके प्रोग्रेसिव लिटरेचर जो, और वो तो आप समझिए कि पूरे इंडिया के बाकी लिटरेचर का भी तो वही हाल है ना। अगर जी 1930s एंड 1940s में बाकी लिटरेचर में भी जो है, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। फैज अहमद फैज से लेकर के ढेर सारे पोइट्स हैं, राइट, जिन्होंने बातें कही हैं, क्लासेस की बात कही है, कास्ट की बात की है। जी शुक्रिया जनाब। आखिरी सवाल है अलमास सईद, प्लीज। Yes, am I आई आस्क यू audible? टू अनम्यूट। जी जी वालेकुम सलाम। Yeah, Assalamu alaikum. Uh, अस्सलाम फरमा। am I audible? यस Yes, जी यू जी yes. जी आर। जी जी, Yes, आप okay. ऑडिबल भी हैं और हमें ये भी मालूम है कि आपका सवाल बहुत खतरनाक होगा। नहीं, मेरा सवाल नहीं है असल में सही सर। मैं बस ये सोच रही थी कि I have been listening to it for almost 2 hours now, and it started with Professor Tanveer Jasab. So he said that Urdu is unable to secularize, and then the inability to find terms for certain epistemic categories like gender. Yes. So isn't that a form of cultural imperialism in itself? Because all this is rooted in the end, all these differences, they are rooted in cultural roots of these languages, right? I mean, Saeed sir would be knowing, or Rashid sir would be knowing it. जैसे हम, I mean, the most recent example that comes to my mind is because we were made to do this text during a PhD coursework when we were doing this Zikre Mir. So the idea was that when it got translated into English, it was translated as an autobiography. But when it was written by Mir, it was not an autobiography per se. It was a form of self-writing where the idea of self has not emerged, right? So, I mean, and there are thousands of examples in Perso-Arabic literary traditions where the person is writing about a host of things, like about courtly culture and politics, and also about glimpses from his own life. So the idea is that the idea of self was not developed in these literary traditions as it emerged in English literature in, I think, 18th or 19th century. So even so, the autobiography, when as we call it, it was a different form of self-writing where this whole idea of ego writing was not developed. The autobiography that ways is a form of ego writing, right? So I think that is, I mean, what I'm trying to say is that we aren't we imposing these epistemic categories, and that in itself is a form of cultural imperialism. And then I was also thinking about a novel that I read recently by Kamila Shamsi, where I'm forgetting the exact lines, but there was something to the effect that there is no concept of ghamkhar in English because the culture is very individualistic, वेल right? सेड, So, वेल सेड। yes. So, so she says that there is an idea, or there's a concept of leaving someone alone in their grief in English. So they mourn in themselves. But Urdu has no such phrase because we, like,
we are joined in grief. So there's, that is a cultural difference. So that is what I was trying to say, that I mean, these epistemic categories, this whole question of finding appropriate words, that how do you reconcile it with it? Thank Because you. Thank you, Alma Saiba. Can I answer? yes, It's only, yes, sure. okay, not too much. We are already on the top of the hour, so Very please be brief. briefly, yeah, I know. Very briefly. See, I think it's a matter of how we perceive knowledge, how knowledge is produced, how knowledge is disseminated, and in fact, how knowledge is preserved. But what I was trying to say is that, this whole business of exchanging knowledge and debating and conversation within the knowledge, in terms of some sort of semblance, right? See, we want to negotiate with the Western world about freedom. We want to negotiate with the Western world about equality. As you said, we want to negotiate with the Western world on the issue of self, on the issue of gender, on the issue of secular. These are a very value laden concepts, and I think we must be so creative in terms of that we can challenge the Western hegemony in a language which perhaps most of us can understand, right? Now they have developed a language, but then that language of liberty, equality, fraternity, for instance, and the kind of trajectory that they have taken, the vantage point from where they speak, we need to develop our systems, Urdu itself, literature, in such a way that we negotiate with them. We are not in a position to negotiate. I mean, gender में हम कैसे क्या बोले बताइए? अब वो एक जेंडर एक कंसेप्ट है, वो ये तो है नहीं। अब हम ढूंढते रहते हैं, जीन्स है, लिंग है, पता नहीं, we are not getting the right kind of conceptualization. So चलिए, बहुत there lies शुक्रिया, the whole issue. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much. तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है खत्म हुआ होता, और जो है अब ये वापस, मेरे ख्याल में मैंने हर एक के सवाल जो है एंटरटेन किए हैं। अगर माजरत अगर किसी का रह गया, लेकिन बैक टू रजी भाई प्लीज। आज अच्छा ये हुआ कि हमारे मॉडरेटर साहब ने उर्दू में जो है मॉडरेट किया। ये अकेले थे जिन्होंने बाद में इस बात पे कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उर्दू का सेशन है, इंग्लिश में क्यों हो रहा है। तो उनको समझना चाहिए कि भाई इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ उर्दू विच अदर शुड नो अबाउट। तो वो लैंग्वेज जो है, जो बेस्ट लैंग्वेज स्टिल रिमेन्स इंग्लिश। there is no doubt about that. We have to accept certain things. ये एक चीज इस सेशन से अच्छी निकली जो सईद साहब ने कहा कि ये सीरियस बिजनेस है उर्दू का और हिंदी का। इसको टॉक के फॉर्मेट में कोल्ड कहते हैं ना कि कोल्ड फॉर्मेटेड एक टॉक हो जाती है। इसको कन्वर्सेशन के फॉर्म में जब आप लाएंगे, then you will see the emotions and you will see the issues erupting or agreeing or disagreeing. तो ये चैलेंज सईद साहब ने उठाया था, तो आई पुट ऑन हिम। और ये लॉन्ग ओवरड्यू आप है एक जमाने से कि आपको मुझे तो पकड़ना था ना आपको किसी वक्त, तो ये आप खुद ही हमारी झोली में, ये राशिद साहब ने जो आपका आप टाउन हॉल मीटिंग हो जाए। तो मैंने कहा कि यार ये सईद साहब को क्यों ले आए। तो ये तो मुझे बहुत दिनों से इनका इंतजार था, चलो खुद ही आ गए। तो आप ऐसा करें, रियली आई एम टेलिंग यू, आप इसमें हिंदी को वालों को ले आए। आई मीन ऑफ कोर्स दानिश इकबाल बहुत चीज़ों को ले आए, दूसरी चीज़ों, बट इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट एंड लाइट लिटरेचर। बट सीरियस बिजनेस में जैसे अशोक वाजपेयी, अशोक राय, नो अशोक राय तो आ रहे हैं अगले में। अशोक वाजपेयी साहब is a big name, and he appeared once in our session with the other tall person, Ganesh Devi. So Ganesh Devi is a very well-known linguist. So the Ganesh Devi और अशोक वाजपेयी का conversation था. It was really wonderful session. So a session on Hindi and Urdu sisterly presence
और कहाँ लाइटर डिसएग्रीमेंट है, कैसे एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। लोकरा को ले आइए, आपने युद्ध नामवर सिंह भी है, नामवर नामवर सिंह। सिंह है, ले इंतकाल आइए। फरमा गए, मेरा इंतकाल हो गया नामवर उनका। नहीं, नामवर नामवर सिंह सिंह का तो अब रहे नहीं, नहीं। नहीं, नामवर सिंह तो नहीं है। चले गए, नहीं चले गए अच्छा भाई, उनका अच्छा। नाम रहा है, रिसेंटली बस जल्दी उनका गए। नाम है। ओहो। बट देर आर प्लेंटीफुल पीपल हैं। आप एक सेशन कीजिए, 2 सेशन कीजिए, बट सीरियस कन्वर्सेशन इसमें हो। इसे फ्रेंडली कन्वर्सेशन फैमिली में जैसे होता है, एंड वेरी स्कॉलरली सेशन, वन पीपल शुड डू। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑडियंस। तो ये आपको प्लेंटी ऑफ टाइम हम दे रहे हैं, आप काम कीजिए। थोड़े थोड़े खाली वक्तों में, आप तो यू आर ए वेरी बिजी पर्सन, आई नो यू आर क्वाइट बिजी पर्सन। वंडरफुल सेशन तनवीर साहब, आपने शुक्रिया शुक्रिया। लिटरेचर में न रह करके भी आपने आज लिटरेचर को के बारे में खूब जी अच्छी तरह से शुक्रिया। वर्क किया। राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग देम एंड पुटिंग ए वंडरफुल टॉक, एंड आई एम श्योर पीपल हैव लर्नड एंड एंजॉयड। और अब बहुत आप लोगों को, आप लोग, हम लोग तो रोजे में हैं, या जो लोग भी रहते हैं दिन में, आप लोग खा पी के बैठे हुए हैं, आराम से रहिए। और कमल साहब वाली बात बड़े मजेदार थी भाई, कि आप बताइए कि भाई ये कमल है, कमाल है, कौन साहब है, इसलिए कि उसको आप उसी गुड पॉजिटिव उसमें लीजिएगा। हमारे एक भाई का नाम है, वो KAMA लगता है, वो कमाल है, तो मैंने कहा तुम दोनों में फिट हो जा रहे हो, बहुत बहुत सही है, क्योंकि अब हमने कभी ख्याल नहीं किया। दैट्स ओके। नो। हाँ साहब, कमल साहब। राजी साहब, आपसे सिर्फ 1 मिनट की गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी, 1 मिनट? मात्र 1 मिनट। तो वो हमारे बस मॉडरेटर मेरा समय शुरू होता है अब। अच्छा तो मेरा नाम है सर कमल सिंह, जी जी। और मैं एक बारी मलेशिया गया था किसी एक्सपीडिशन के लिए, तो वहां पर जितने समय मैं रहा, लोग मुझे कमाल ही समझते रहे, और वो भी एक नजरिया था। मैं सर एक चीज आप सबसे कहना चाह रहा हूं, मैं एक हिंदू हूं, और नॉन उर्दू स्पीकिंग मैं पहले सोचा था कि मैं बोलूंगा, लेकिन फिर नीरज साहब के जो छोटा सा एक उन्होंने किस्सा बताया, तब मुझे लगा कि हाँ, वाकई देखा जाए, मैं हिंदी बोल करके भी मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूं, उसमें उर्दू इस खूबसूरती से शामिल है कि पता ही नहीं चलता है। और पता कहां से नहीं चलता है, बचपन से लेकर के बड़े हो गए, 60 साल की उम्र होने को आ रही है अब, और पता ही नहीं चलता है कि कहाँ उर्दू है और कहाँ हिंदी है। सच बात तो ये है। सही बात है। और दूसरी एक आखिरी चीज मैं जो कहना चाह रहा हूं आप सबके लिए, कि so to say, technically speaking, being a non-Muslim, well, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उर्दू नॉन उर्दू, मैं उसको उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि उर्दू मेरी जबान नहीं है उस तरीके से, ना मैं लिख सकता हूं ना मैं पढ़ सकता हूं। लेकिन मैं एक चीज आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा, कि मुझे यह जबान बहुत खूबसूरत लगती है, और इसकी जो शेरो शायरी होती है, जिस तरीके से जिन अल्फाजों का, जिन शब्दों का इस्तेमाल करके शायर अपनी बातें कहती हैं, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और मन तो करता है कि सीखूं, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन आप सबको मेरी बहुत बहुत मुबारक। और वो कहते हैं कि ये घोस्ट ना रहे, ये ग्रे में ना रहे, ये अपना या तो ब्लैक में रहे, व्हाइट में रहे, और ऐसे ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए राजी थैंक साहब। यू, थैंक यू। आई थिंक रजी घोष का। रजी भाई, एक हाँ एक बात कह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कहें। बस ये कहना है, उर्दू बहुत शीरी जबान है, जरूर, बिल्कुल। और दुनिया बहुत तेजी से डायबिटिक होती जा रही है। इसके लिए दोष इसके लिए दोष उर्दू को जबरदस्त। दिया जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त लाइन थी भाई, बहुत खूबसूरत। ओके, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त लाइन थी। और फिर मिलेंगे, और इसी तरह मिलते रहिए, अच्छा प्रोग्राम देते रहिए। हमारे लोग लर्न करते हैं, इसे एजुकेशन इसी से नॉन एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। कहा जाता है ना, किसी उम्र में भी आप बहुत लर्न नहीं कर पाते, इतना लर्न करने के बाद भी, you know that really there are so many other people who know so much, and that guy himself says that I don't know anything really. So it's a wonderful word.
So it's good to see you all. Thank you very much. और आप भूलिएगा मत, वैसे बिजी पर्सन आप हैं, लेकिन हम आपको याद करते रहेंगे. Yeah, thank you all. Thank you, शुक्रिया, Rashid. शुक्रिया राजी साहब, शुक्रिया. थैंक यू. आपने राजी साहब पहले भाई कहते थे, अब साहब कह के बहुत ही ठंडा कर दिया हमको. तनवीर साहब, हम अब आपको तनवीर साहब कहेंगे. पहले हम आपको तनवीर कहते, जब आप भाई कहते थे हम आपको सिर्फ तनवीर कहते थे. तो अच्छा है. तो साहब हटा दीजिए, तो फिर हम लोग बैक टू मैं नाम. साहब हटा देता हूँ. हाँ. अच्छा, ये भी उर्दू की लफ्ज है साहब, बहुत अच्छा लगता है. वो माफ कीजिएगा, एक मजाक तो लखनऊ वालों ने सुनाया था कभी, बहुत पहले हम लोग जो अलीगढ़ में स्टूडेंट होते थे. जी. उन्होंने कहा भाई कि वो पंजाब का एक दोस्त लखनऊ आया, तो उसको ठहराया गया उसके घर में. तो सुबह को वो झाड़ू देने वाली घर में आई, तो उसने इनको झुक के सलाम किया. तो वो उन्होंने उसको पैसा दे दिया उसको. तो समझा कि बस, मतलब झुक के सलाम. उसके बाद फिर उसने सलाम कर दिया, उसके पैसे ही देते जा रहे थे. वो सलाम से वो दोस्त आ गया कमरे में कि कर क्या रहे हो तुम. कि भाई ये अजीब लालची है, ये जब मैं इसको पैसे देता हूँ सलाम कर देती. कभी ये लखनऊ है यार, इसमें पुराना कल्चर है. आप मेहमान हो, उसको झुक के सलाम करिए, थोड़ी वो पैसा आपसे मांग रही थी. तो ये तो तरीके की बात थी. तो वो है ना, वो खुशवंत सिंह ने कहा था कि साहब उनका मकान बहुत अच्छा है, सब आप ही का है. तो उन्होंने कहा कि इस जमाने में कोई कहेगा तो कागज लेके आ जाए, कह यार साइन कर दो इस पर. अच्छा भाई, खुदा हाफिज, बहुत देर हो गई आप. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाँ हाफिज. भाई, आदाब, अस्सलाम कमल वालेकुम. साहब फिर आइएगा. और बहुत कुछ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ ही दिन में, आई थिंक इन मार्च, Alok Rai is coming with Mahmood Faruqi. So that will be another very good session. On the same similar theme, I think, कि इंडियन कल्चर में यानी की रिचनेस